guys might be thinking कि मैं ये क्यों पहन रही हूँ, तो जी हाँ, मैं आपको बता दूँ कि जो आज की वीडियो होने वाली है ये वैलेंटाइन में मैं कुछ इंडियन लुक लाई हूँ आपके लिए, कुछ एथनिक सा लुक लाई हूँ। ओ गॉड, मेरे बालों पे फंस गया ये। ओके, निकाल के मिलती हूँ। Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing fine, safe, secure at your place. So आज की वीडियो क्या होने वाली है, तो बाय टाइटल आप लोग समझ ही गए हैं। जी हाँ, ये वैलेंटाइन मैं कुछ एथनिक, कुछ ट्रेडिशनल करना चाहती हूँ मतलब अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए ऑफ कोर्स। तो मैं ये एथनिक लुक लाई हूँ, बिल्कुल देसी ट्रेडिशनल लुक। आई एम वेयरिंग दिस कांजीवरम रेड साड़ी। इट्स अ वेरी प्रिटी रेड साड़ी। आई डोंट नो यार, ये पता नहीं कैमरे में पता नहीं क्यों ये ऐसे दिख जाता है, क्या बोलते हैं, टेंगी सा दिख रहा है, बट इट्स अ वेरी प्रिटी रेड शेड। ट्रस्ट में, पता नहीं ये ऑरेंज दिख रहा है कैमरे में, आई कांट हेल्प इट। एंड आई एम क्रिएटिंग दिस लुक, सॉरी, आई हैव डन दिस लुक फॉर यू ऑल। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड येस, दिस मंगलसूत्र इज़ ऑफ कोर्स फेक। दिस इज़ बाय, ये मोनी रॉय बहुत पहनती है, मैंने उनको बहुत देखा है ये पहनते हुए। सो मैं भी सेम ऐसे कॉपी वाला लाई थी क्योंकि मुझे उनका एक इंस्पायर्ड मेकअप लुक करना था, जो कि अगेन मैं नहीं कर पाई, मुझे टाइम नहीं मिला। बट येस, मैं आने वाली वीडियोस में ज़रूर करके दिखाऊंगी आपको। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। So guys, I'm just going to clean my face. For cleaning, I'll be, first going to add the toner to my face. This is by Good Vibes Rosehip Toner. So let's spray it on your face. Sprayed it, and now I'm going to clean my face with this, with the help of a tissue. And look at the dust. Okay, so now next step would be to apply moisturizer. So I am going to apply a lot of moisturizer. So I'm using this vitamin E's moisturizer. Going to, I just want to make my face very hydrated. Guys, let's start with the eye makeup, my favorite part. So for that, I am going to conceal my eyes by using this Maybelline Instant Age Refined Eraser Multi-Use Concealer. So okay, because I am fond to the white base concealers, and you know the reason is because white base concealers give you the enhancement to the eyeshadows to your eyes. So here I have opened it, and now I'm just going to blend it over my eye, all over my eye and below my eyelid. Now lock your concealer with any loose powder or any compact. Here I'm using again the Maybelline's, my favorite brand, compact powder, and I'm just going to lock my this concealer. Doing makeup by yourself gives you so many creases, so make sure. I can't help it, I have to tell you, I have to explain you step by step. So yeah, see, it has been locked. Now let's move on to the colors, my favorite part. Eyeshadow, I'm using this palette. This is by Beauty Glazed. So I am going to use this portion of the palette, which is okay. So let's add some red to the crease line. Guys, I'm done with doing adding the red color to my all over my crease line. Now next I'm going to take a kajal, because I do not have that black color, black eyeshadow color. And the next I'm going to add this brown. So let's first take brown shade, and after that I'll merge it with the black kajal. So I'm going to apply it to the outer corner of my eyelid. Now merge this kajal very nicely. So guys, you guys can see that I have added this red shade and the black shade. I have merged them, and I have keep a gap here. I did not fill any color over here because I wanted to add some golden color, because my blouse has this golden print onto it. So for that I am going to add this golden shade from the same palette, from this, and I'm going to keep it from my finger. Now this same red shade I'm going to apply it over my lower crease line. This red shade. Let's
add some eyeliner. For that, I'm using this Lakme's liquid eyeliner. Guys, जब तक ये mascara, sorry, eyeliner सूख रहा है, let's fill the brows. For that, I'm using this Swiss Beauty's brow pencil. Let's apply kajal now. For kajal, I'm using the same kajal, this Lakme 9 to 5 natural gel kajal. I have misplaced my the kajal brush, so I'm using this brush. Let's see apply होता है या नहीं होता. Yes, I have done applying kajal और I don't know क्यों पानी आ रहा है मेरी आंखों से इतना. Okay, ये बहुत टाइम बाद लगा रही हूँ. Oof. Okay, so let's apply the lashes. Next, let's add the eyelashes. For that, I'm using this Red Cherry Spidey eyelash, and for glue, I'll be using this Pax glue. As I always advise, is invest in your eyes. Oh wow, ये तो rhyme बन गई. Nice. Okay, so let's apply glue to the lashes and apply and fix it to the real lashes. So guys, I have applied the fake eyelashes as well. और पता नहीं क्यों लगा रहे टाइम मुझे itching होने लग गई. और I don't know आज मेरे आँख से इतना पानी क्यों आ रहा है. What's the reason? So ठीक है, let's fix this out. थोड़ा सा मुझे itching हो रही है, पानी आ रहा है मेरी आँखों से. ठीक है, I'll apply more of this क्योंकि हट चुका है अब ये पानी आ आ के. Maybe because of cold ऐसा हो रहा है. Okay. So guys, for base makeup, I am going to use the same concealer. I am not going to use any foundation today because I just want to make it very, very easy, very subtle, simple. Okay, so ये makeup करते करते आधी चीज़ें पता नहीं हम कहाँ रख देते हैं. So let's begin with this. Now blend it well. So I'm using the brush. Okay, so let's see the coverage. ये कैसी coverage देता है. You can use the beauty blender as well. Beauty blender ज़्यादा अच्छा blend होता है उससे. But पता नहीं क्यों I like brushes. Now let's lock the concealer. For that I am using this same compact powder. Next is applying blush. For that I am using this LA Colors palette. I have that Maybelline blush as well, but let's do it. Let's apply it. This what blush has a highlighter too, so I'm not adding any extra highlighter वरना बहुत ज़्यादा chunky और shiny सा हो जाएगा. Next I'm going to add ये वाला this white and golden. I'm going to add it to my this inner corners. Sorry, yeah, it's inner corners of my eye. Last is applying lipstick. For that I'm using this Huda Beauty's red lipstick. Let's apply it. My blouse is in the very good red color, but I don't know, maybe due to the light effects it's showing a bit tangy orange, but it's a very pretty red color. Okay, so let's apply lipstick. Wrap my saree. Now I am going to add the jhumkas, wear the jhumkas and add a mangal sutra and maybe a bindi, then I'm done.
So guys, by this I end this video here, and I hope you guys enjoyed watching this video. And if you don't know, then you know what you have to do is like, share and subscribe to my channel. I'll see you in my next video. Till then, bye guys, and yes, happy Valentine Day in advance. And सिर्फ वैलेंटाइन वाले दिन ही प्यार नहीं, हर दिन प्यार बांटो। प्यार की बहुत कमी है इस दुनिया में। खुश रहो, प्यार बांटो। खुश रहना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा बहुत खुश रहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी फैमिली भी बहुत खुश रहे, मतलब मेरी ये यूट्यूब फैमिली बहुत खुश रहे। सो आई होप गाइज कि आपको अच्छा लगा। बिल्कुल सिंपल सटल ईजी सा लुक है, और अगर अच्छा लगा तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। आपको ये ट्राई करना है, ट्राई करके वापस मेरे चैनल पे आना है, कमेंट करना और मुझे बताना है कि कैसा लगा। टिल देन बाय गाइस, टेक केयर, लव यू। एंड येस, हाउ इज़ माई दिस साड़ी। बाय द वे, मैंने करवा चौथ के लिए लिया था, मुझे करवा चौथ लुक बनाना था, लेकिन मेरे को मैं नहीं बना पाई, मुझे टाइम नहीं मिला, तो इसलिए वैलेंटाइन पे बना दिया। तो बाय।